Okay, so let's discuss one more set. The name of the set is TET exam. Set goes like every year, central government holds teacher eligibility test TET two times in a year. One takes place in July and the other one takes place in December. Rajesh runs a coaching center in five different locations A, B, C, D, and E for TET. From all his coaching centers, total 1200 aspirants take test in July 21. So this is for July 21, 1200 aspirants. The below pie chart is giving the missing data for the aspirants of the five coaching center. The inner circle represents the student who took the test in July 21, and the outer circle is for the aspirants who retook the test in December 21 from the five centers in some order. The data of the aspirant in the given below pie chart for five coaching centers is marked as 1, 2, 3, 4, 5 in some order. That is, the order is random, right? Some other information that is known to us is the number of aspirants that take test in July 2021 from coaching center. This is forms an increasing AP, arithmetic progression. The number of aspirants from each coaching center that retake the test in December form a GP. The aspirant who did not take the test in December 21 qualified the test in July 21. Obviously, those who qualified the test in July 21 need not to attempt that in December 21 again, right? There were 100 aspirants each from qualified TET from coaching centers E and B only in July 21. Okay. The maximum number of aspirants qualifying for TET were from coaching center D and the minimum number were from center C. ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक पाई चार्ट गिवन है, किस तरह से इसको प्रोसीड करना चाहिए देखते हैं. सो एक टेबल स्ट्रक्चर बनाया मैंने, एक टेबल स्ट्रक्चर जिससे हम इसमें लिख पाए कि व्हाट वर द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस दैट attempted the test in July 21, out of which how many were qualified the exam, how many retook the test. तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर हमने रेडी किया है. तो अब वन बाय वन इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू रीड दिस पाई चार्ट. So inner circle was for July 21, and for July 21 the first area is X, second one is 300, this value is given as 300, third is not known to us, fourth is again not known to us, fifth one is Y. And for December the values for these three are not known. For fourth it is Y by 3 and for fifth it is X by 3. ये हमें गिवन है. स्पाई चार्ट का ये रोल खत्म होता है और फिर रोल लेता है स्पाई चार्ट का. केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन मिल रही है मुझे स्पाई चार्ट से. We know that the total number of aspirants in July 21 were 1200. 1200 were in total, right? ये लिख लेते हैं हम पहले. The number of aspirants that take the test in July 21 from coaching 1, 4, 5, 2 and 3. So from 1, 4, 5, 2 and 3. Now this form an increasing AP. हमने AP पढ़ा है. We know that whenever we need to assume 5 terms in AP, so let us assume them to be A minus 2D, A minus D, A plus D, and A plus 2D. So the sum of all these values must be equal to 1200 because there were total of 1200 students who appeared in July 21, right? So when we add all these values, we'll get 5A. D will get cancelled out, right? So 5 equal to 1200. From here, we have the value of A directly as 240, and A was the number of students who appeared from fifth region. So this is Y. This Y is basically 240. And if Y is 240, this Y by 3 is 80. Right? And what further we can say that the number of students in second region was 300. And in second region, it is A plus D. Now A plus D is 300. Out of which A is 240 already. So D is 60. So we now know the number of students in each and every region. In first region, it is 240 minus 60 into 2. That is 120 student in first. So we now have the value of X as well. That is 120. In the X is 120, this comes out to be 40. बहुत इजीली हुआ ये, कोई दिक्कत नहीं आई. केवल एक एपी वाला पॉइंट इतना अच्छा निकला तो बहुत सारी चीजें हमें पता लगवा दी है. सो वी हैव यूटिलाइज्ड फर्स्ट पॉइंट. अब हमें सारी वैल्यूज पता चल गई. इन थर्ड रीजन द वैल्यू इज A plus 2D. Now A is 240 and 2D is 120, so that becomes 360. And for third reason it is, no, this was for third reason, right? How much? 360 was for third reason. For fourth reason it was A only, and A was no. For fourth reason it was A minus D. So that is 240 minus 60 is 180. ठीक है, सारी वैल्यूज बच्चों में मिल गई हैं. जो इनकी कंडीशन थी कि दे आर इन एपी, हाँ तो एपी में है सारी, राइट? तो ये हमें पता चल चुका है अभी तक एज ऑफ नाउ. एंड हमें दो वैल्यूज दिसंबर 21 की भी मिल गई है.
तो उससे हम क्वालिफाइड का भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं. सो वी कैन डेफिनेटली से दैट इन मंथ ऑफ लाइक फॉर फ्रॉम रीजन 4 द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाइड वाज 100. यहां पर कितना था? 200 था. राइट, ये हम कह सकते हैं. The number of aspirants, second point, the number of aspirants from each coaching center that retake the test in December form a GP. Now, these value must form a GP. Now, order is not given to us. यहाँ पे AP का order दे रखा था. यहाँ पे GP का order is not given to us. Fine. But ये सारी values GP में होंगी. ठीक है. Now, see, यहाँ पे एक बहुत important point हमें पता चल चुका है. These values are in GP. Now, out of these 5 values, 2 values are 40 and 80. यदि एक 40 है एक 80 है, so can we have some value in between of 40 and 80? एक बार देखते हैं कि 40 और 80 के बीच में कुछ ऐसा इंसर्ट किया जा सकता है जिससे वो जीपी रहे. आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हम यदि इसका ज्योमेट्रिक मीन भी लेंगे दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ 80 into 40, दैट वुड बी फर्दर 10 root 32. फर्दर यदि हम इसको लिखें तो 40 root 2, तो दैट विल बी इन पॉइंट्स. राइट, तो ऐसा कोई टर्म आ नहीं सकता है. फ्रॉम दिस वी कैन से दैट these two must be consecutive terms of GP. और यदि ऐसा है तो जीपी का कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? कॉमन रेशियो क्या होता है? दिस टर्म डिवाइड बाय द प्रीवियस टर्म. राइट, तो कॉमन रेशियो इज कमिंग आउट टू बी 2. सो क्या जीपी हो सकती है हमारे पास? वी हैव 40, वी हैव 80. तो क्या हम इसको 160 और 320 और 640 कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो. व्हाई नॉट? बिकॉज द हाईएस्ट नंबर दैट अपीयर्ड इन जुलाई वाज 360 ओनली. उसमें से भी कुछ पास हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं, तो जो रिमेनिंग है केवल उनने रीटेक लिया है. तो इट हैज टू बी डेफिनेटली लेस देन 360, डेफिनेटली. राइट, तो दिस कैन नॉट बी द केस. हम ये तो नहीं ले सकते. कैन वी डू इट लाइक दिस? इसको 20 ले लें, 20 40 80 60. आई थिंक ऐसा कर सकते हैं. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? 10 20 40 80 and 160. आई थिंक वी कैन डू दिस ऑल्सो. सो एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग टू केसेस जो हमें जीपी में बनता हुआ दिख रहा है. राइट, आउट ऑफ विच लाइक यहां पर हमने 80 और 40 लिख रखा है, बाकी तीन वैल्यूज का वी नीड टू डिसाइड. राइट, देखते हैं आगे क्या पॉइंट है. तो वी यूटिलाइज सेकंड पॉइंट आल्सो ना, वो भी यूज कर लिया है हमने. द एस्पिरेंट हु डिड नॉट रीटेक द टेस्ट इन दिसंबर 21 क्वालिफाइड द टेस्ट इन जुलाई 21. अंडरस्टूड है? जिन्होंने रीटेक, जो क्वालिफाई कर चुके हैं वो रीटेक क्यों देंगे? राइट, देयर वर 100 एस्पिरेंट्स that qualified TET from coaching centers E and B. So from B and E, the number of qualified students is 100. For B and E, it is 100. The maximum number of aspirants qualified the TET from coaching center D. तो D से जो maximum ने qualify किया था, and जो C है उससे minimum ने qualify किया था. तो बच्चों ये information है. अभी हमें इसको set करना है. किस तरह से देखना है कि जो GP वाला है, एक तो वो किस तरह से adjust हो सकता है. Apart from that, B और E का जो 100 आना चाहिए उस पर फोकस करते हैं ना. सो सी, B और E का 100 आना चाहिए. वी हैव ऑलरेडी गॉट 100 इन रीजन नंबर 4, वो हमको मिल चुका है. एक और 100 कहाँ आ सकता है? नाउ सपोज यदि हम यहाँ पे 120 है, यदि यहाँ पर केवल 20 अपीयर करते हैं दिसंबर 21 में, तो क्वालिफाइड का नंबर 120 100 आ सकता है. आई थिंक. राइट, ठीक है. क्या 300 में से इनमें से कोई सी भी वैल्यू है जो हमें 100 दे सकता है डिफरेंस? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज फॉर दैट वी नीड टू हैव 200. नहीं है, नॉट पॉसिबल. 360 में से क्या कभी भी हमको 100 मिल सकता है? अगेन आई डोंट थिंक सो, बिकॉज फॉर दैट वी नीड टू हैव 260 व्हिच इज नॉट देयर. राइट, हमको पता चल गया यहां से 20 स्टूडेंट्स अपीयर किए थे और 100 ने क्वालिफाई किया है. तो दीज टू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर B and E. Now which one is B, which one is E, we are not sure about that, but हमें पता चल चुका है B और E यही होंगे. राइट, ठीक है. उसके बाद की बात करते हैं. Now 20 we have already utilized. Now 80 and 40 we have already utilized. Now we are confused between the two GPs. इन दोनों में से कौन सा लेना है? We have 160, we have 320 and 10. Now see, 320 यदि हम लेते हैं, यदि हम ये वाला केस लेते हैं बच्चों 10 और 160 का, तो यदि मैं यहाँ पर 10 लेता हूं तो ये 290 हो जाएगा क्वालिफाइड. यदि मैं यहाँ पर देन 160 लेता हूं तो यहाँ पे 200 हो जाएगा क्वालिफाइड. राइट, यहाँ पर यदि हम 160 लेते हैं तो यहाँ पर 140 हो जाएगा क्वालिफाइड. यदि यहाँ पर 320 लिया जाता है तो 40 रह जाएगा क्वालिफाइड. राइट, नाउ वी नीड टू चेक इट आउट कि दोनों में से कौन सा केस लेना है, कौन सा सही है. तो इन दोनों केसेस में कैसे डिसाइड करना है वो एक बार समझते हैं. मैं एक बार इरेज कर देता हूँ. वन बाय वन हम केसेस लेते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे.
ओके, तो सबसे पहले हम ये वाला केस ले लेते हैं जिसमें हमने नीचे वाला जीपी ले लेते हैं 10 and 160, द वैल्यूज 10 and 160। देखिए बच्चों, अब इसमें भी यू कैन से दैट सर यहाँ पर 10 हो सकता है, यहाँ पर 160 हो सकता है। ओके, लेट अस फाइन अज्यूम दिस, राइट? इन दिस पर्टिकुलर केस दिस विल बी 290, राइट? लेट मी चेंज द कलर ऑफ द इंक सो दैट so I'm taking this case, तो 10 यहाँ पे लिया, 160 यहाँ पे लिया। In this particular case this will be 290 and this will be how much? 200. Now in the information it is given to us that यहाँ पे difference आ जाएगा, this is the number of qualified, तो difference आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 290 का आ रहा है। Now it was given to us that the maximum number of students qualified from coaching D, in this case this will be D, but then the minimum number of students qualified from C. Now in this particular case the minimum number is 100 and that is for B and E. तो C के लिए तो हमको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। यहां से हम कह सकते हैं कि ये केस तो नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। Now let us reverse the values. यहां पर यदि हम 160 ले लेते हैं और यहाँ पर 10 ले लेते हैं तो again I think the same problem will persist. Now in this case this is 350 which is the highest value definitely, so it must be D, right? अब C कौन सा लेंगे बच्चों? C is the minimum value, but minimum value तो हमने B और E को दे रखी है। तो from this we can say that ये 10 वाला GP नहीं बनेगा, this is wrong. We should definitely focus on this वाला GP. And if we are taking the values to be 160 and 320 remaining values, now definitely we cannot have 320 over here because the total student were 300 only. It is not possible that out of 300, 320 qualified, right? So 320 must come over here. This is 320, qualified were 40. And this is 160, qualified were 140. Now minimum were for C, maximum qualified were for D. So definitely this is A. तो बहुत इजी वे में ये सेट सॉल्व हुआ है। ये बहुत इजी कैटेगरी का ही सेट है, इसमें कुछ ऐसा लाइक कैच नहीं था जहां पे हम अटक जाए। इफ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चंस पार्ट, सो which are the following centers was coaching C? So third was it was the absolute difference between the number of aspirants from coaching E and B. E and B का absolute difference बताना. We are not sure which one is B, which one is E, but then the question is talking about the absolute difference, right? Who retook the test in December? So retook the test in December, so 20 and 80. The difference is 60. If 10%, 15%, 5%, 20%, 25% from A, B, C, D, E. So from A, who retook the test in December, qualified the test, then the minimum number of experiments. Now we are sure about the value of A, who retook the test. From the A for A, the value is 160, right? Okay. For B, we are not sure. For B, it can be either 20 or 80. For C, we are sure it is how much? 320. He who retook the test. For D, it is 40. And for E, again, we are not sure. It can be either 20 or 80. And the percentages are is for 10% for A, 15% for B, 5%, 20%, and 25%. And we need to minimize this value. Then the minimum number of experiment. We need to minimize this value. So obviously, जब मेरे को confusion है यहाँ पर B और E में और मेरे को minimize करना है, तो I would give B 20%, 20 value. Why? यहाँ पे 25% ले रहे हैं बेटा, 25% छोटी वैल्यू का लेना चाहिए। तो हम B को यहाँ पर 80 देते हैं क्योंकि उसका कम परसेंटेज दिया जाएगा। E को यहाँ पर 20 देते हैं क्योंकि उसका ज्यादा परसेंटेज लिया जाएगा। So that will minimize the overall value, right? So 10% of 160 is 16, 15% of 80 is 12, 5% of 320 is 16 again, 20% of 40 is 8, and 25% of 20 is 5. यदि हम टोटल करें तो 32, 44, 52 and 57 in total. Point was B और E में confusion था 20-80 and 80-20. जब हमें पता है कि we are taking 15% of this and 25% of this, तो जिसका ज्यादा बड़ा परसेंटेज है उसको मिनिमाइज रखना है तो छोटी वैल्यू दीजिए, जिसका कम परसेंटेज है उसको बड़ी वैल्यू दीजिए. दिस वाज द पॉइंट, राइट? What was the sum of aspirants who qualified the test in July 2021 from coaching center marked as first and second? So first and second से कितने qualify करे? तो answer is 100 and 140, that is 240. Okay, so I think this set was not that difficult category, easy set था.
मैक्सिमम टाइम जिसमें हम ये कर सकते थे दैट इज 10 मिनट, दैट इज द मैक्सिमम टाइम जिसमें हमको कर देना चाहिए था. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू.